Question number 131. The pair of equation 3x minus 5y equals 7 and minus 6x plus 10y equals 7 have a unique solution, infinite many solution, no solution, or two solutions. So for this question, we know that I have studied the concept of the ratios, that is a1 by a2 equals b1 by b2 equals c1 by c2. अगर ये condition satisfy होती है तो we have infinite many solutions, that is the lines are coincident, right? And if in this very same equation, if a1 by a2 equals b1 by b2, but the c1 by c2 is not equal, then we have no solution, right? And when a1 by a2 is not equal to b1 by b2, then we have unique solution, right? So here, if we check in the given question, if we check this, so let us check these conditions. Here a1, the first equation 3x minus 5y equals 7, तो उसमें a1 क्या है मेरा 3, b1 क्या है माइनस का 5 एंड c1 इज -7, बिकॉज इक्वेशन को 3x माइनस 5y माइनस 7 इक्वल्स टू 0 इस फॉर्म में c को इधर ले आते हैं. हमेशा ऐसे ही करते हैं हम, c को सारी टर्म्स को इधर ले आते हैं और इक्वल टू 0 करते हैं हम. एंड a2 इज इक्वल टू -6, b2 is equal to 10 and c2 equals 7, right? अब जो मैं लिखूंगी वो आपको डायरेक्ट एग्जाम में लिखना था. ये a1 a2 b1 b2 ये सब नहीं लिखना होता है. डायरेक्ट a1 बाई a2 हम बोलते a1 बाई a2 है और लिखते हम वैल्यूज़ को हैं. तो 3/-6 इज इक्वल है या नहीं वो देखेंगे. -5/10 and equal 7/7, -7/7. Here -7 will come. Okay, so now let's check whether these are equal or not. If I cut this, simplify this, so 1/2, which is -1/2, equals -1/2 equals 1, which is not equal. This condition doesn't satisfy. So ये हमारा फिर क्या है, नो सॉल्यूशन हो गया ना. व्हेन a1 by a2 equals b1 by b2 but not equal to c1 by c2, in that case we have no solution. So option number 3 is the correct answer. Moving on to question number 132. If the mean and mode of some data is 4 and 10 respectively, its median will be. So for this, we very well know that we have a formula for mean, median and mode. When one of the three is not given and other two are given, we can find the third one, right? And the formula is 3 median equals 2 mean plus mode. Okay, how can you learn this formula? Basically देखो 3 है, 2 है और इसके आगे 1 है, राइट? तो 3 equals 2 plus 1. सो मोड इज द स्मॉलेस्ट लेटर, तो 1 के साथ सबसे छोटा आएगा, राइट? एंड मीडियन इज द लार्जेस्ट, तो 3 के साथ मीडियन आएगा एंड बचा हुआ यहाँ पे मीन आ जाएगा. ठीक है, तो यू कैन लर्न इट दिस फॉर्मूला like this. Substitute the given values. Mean is given, which is 4. So 2 into 4 plus 10. What will be the answer? 4 2s are 8, 8 plus 10 18, and मीडियन की वैल्यू आएगी, ये 3 भी है, इसको हम डिवाइड में ले जाएंगे तो मीडियन इज 18/3 विच इज 6. तो ऑप्शन नंबर 3 इज द करेक्ट आंसर. क्वेश्चन नंबर 133. F is defined from R to R is a function by
by f of x equals greatest integer function. So we have to check whether it is 1 1 on 2, 1 1 and on 2, neither 1 1 nor on 2. ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन का डायरेक्ट ग्राफ देखिए. अगर मैं ग्राफ बना के दिखाऊं आपको तो क्या होता है. ग्राफ बनाए तो आई एम मेकिंग अ रफ ग्राफ. ओके, सो हमारा ग्राफ कुछ ऐसा होता है, राइट. तो क्या ये 1 1 है? जी नहीं. क्या ये ऑन 2 है? जी नहीं. सो ऑप्शन नंबर 4 इज द करेक्ट आंसर. हाउ डिड आई सेट दैट कि ये 1 1 है या नहीं है? देखो, 1 1 के लिए हम ग्राफ, just by looking at the graph we can check it. We take a horizontal line along the x axis, right. और ये लाइन सिर्फ ग्राफ में सिर्फ एक ही पॉइंट को कट करनी चाहिए. लेकिन अगर मैं इसके पैरेलल अगर मैं ड्रॉ कर रही हूँ, इफ़ आई एम ड्रॉइंग दिस लाइन, देखूँ तो ये तो पूरे इस पे कोइंसिडेंट कर रहा है, तो ये 1 1 नहीं है. ठीक है, 1 1 के लिए सिर्फ एक ही पॉइंट पे कट होना चाहिए हॉरिजॉन्टल लाइन को. and for onto, range should be equal to codomain, but here r is not equal to codomain of this given very function. So option number 4 will be the correct answer, that is neither 1 1 nor onto. 134 cos 510 degree into cos 330 degree plus sin 390 degree cos 120 degree equals what? So here we have to simplify these angles that we are given. So can I write 510 degree as 360 plus 180 minus 30? Can I write it like that? क्या किया, 510 को मैंने ये लिखा. तो लेट्स चेक हम अब कौन से क्वाड्रेंट में हैं. तो 360 प्लस 180, आई वेंट हेयर. नाउ आई एम सब्ट्रैक्टिंग 30, सो आई एम in second quadrant, right. And in second quadrant cos is negative, and as I am subtracting from 180, so 180 पे कोई change नहीं होता, cos will remain cos only. ठीक है. So basically what I mean is cos 510 degree becomes minus cos 30 degree. Got my point? Similarly, cos 330 degree will become cos 30 degree. How? Because I can write it as 360 minus 30 degree, and as soon as I 360 do 360 minus, it will go in fourth quadrant, and in fourth quadrant cos is positive, and no change is there when we subtract or add something to 360. Similarly, sin 390 degree will become sin 30 degree, and the last angle is left, that is cos 120 degree. 120 degree will be minus cos 60 degree, as it can be written as 180 degree minus 60 degree, and 180 minus, we reach second quadrant where cos is negative, so minus cos 60 degree. Now let's write the simplified question, given question, simplified version of the given question. Now let's write the simplified version of our given question, right? So our question became minus cos 30 degree into cos 30 degree plus sin 30 degree minus, into multiplication is there between these two digits, these two, cos minus cos 60 degree. So as I simplify this will be cos square minus cos square 30 degree, and cos 30 degree is root 3 by 2, so it become minus 3 by 4, right. And this minus will come out, right.
हेयर आ जाएगा यहाँ पे, तो फिर इसको मैंने माइनस लिख लिया. एंड sin 30 is 1/2 and cos 60 is again 1/2. So simplifying this, what we are getting? Minus 3/4 minus 1/4, which gives us -1. Hence, the option number 2 is the correct answer. Question number 135. We are given two sets, that is A and B. A is defined as A contains all ऐसे such x for which x belongs to R and x greater than 4. मतलब R में बिलोंग कर रहा है. अगर मैं रियल लाइन पे इसको डिनोट करूँ इसको, तो 4 यहाँ पे आएगा, 4 से बड़े, मतलब यहाँ पे ओपन डॉट लगेगी and this region will be shaded. Let me use another pen. So this will be the representation, right? And for B, it is less than 5. X less than 5. So 5 यहाँ पे है, तो less than 5, तो this will be the, and we have to find A intersection B. A intersection B, अगर इन दोनों में कॉमन चीज़ देखूँ मैं, क्या आएगा? ओपन ब्रैकेट 4,5, द इंटरवल ओपन ब्रैकेट 4,5, राइट? So option number 2 will be the correct answer. Question number 136. The focal distance of a point on the parabola y square equal to 12x is 4. So if I compare with the general equation y square equal to 4ax, our a will be what? 3, right? We is comparing this, a will be 3. Okay. And since focal distance is given, focal distance is the from a point x1 is x1 plus a, which is equal to 4, right? And x1 equals 4 minus 3, which gives us 1. x1 is 1. So option number 1 is the correct answer. Question number 137. The center of the circle x square plus y square minus 6x minus 4y plus 4 equals 0. So compare it with the journal equation of the circle, which is x square plus y square plus 2gx plus 2fh plus c equals 0. Here g and f gives the center, and the center is given as minus g comma minus f. And when you compare this very given equation, 2g equals 6 and g equals 3, right? And 2f equals minus 4, f is minus 2. Therefore center of the given equation of the circle is minus g minus 3 comma minus f minus minus 2 will be 2. So option number 4 is the correct answer. Question number 138. What is the equation of hyperbola whose length of the lattice rectum is 8 and eccentricity is 3 upon root 5? Firstly, length of the we have the formula for the length of the lattice rectum, which is 2b square by a. And what is the given length in the given condition? It is 8. So from here we get b square equal to 4a, right? How? This will cancel and 4 will, so 4a को इधर ले गए, right? And now eccentricity is given, and we have the formula for eccentricity, which is 1 upon 1 plus b square by a square equals e, that is 3 by root 5. अगर स्क्वायरिंग बोथ साइड किया मैंने, राइट, तो स्क्वायर से रूट चला जाएगा और यहाँ पे 9 आ जाएगा और नीचे 5 का रूट 5 विल बी 5. So we get 1 upon b square by a square equals 9 by 5. So b square by a square equals 9 by 5 minus 1, which gives this, only this, 4 by 5.
right? So b square by a square equal to 4 by 5. And from the length of lattice rectum, we have find the value of b square, which was 4a. So 4a by a square equal 4 by 5. a से a के कैंसिल हो जाएगा, तो यहाँ से 4 से कैंसिल हो जाएगा. a is 5. And if we check options, there is only one option which have a 5, that is here a is 5 because a square is 25. So option number 2 will be the correct answer. Definition of hyperbola is x square by a square minus y square by b square equals 1. यहाँ पे a स्क्वायर आता है और a मेरा 5 आया है. सो एक ही ऐसा ऑप्शन अगर हम बाकियों में देखें तो किसी में भी नहीं है. सो ऑप्शन नंबर 2 विल बी द करेक्ट आंसर. क्वेश्चन नंबर 139. 3 points are given, that is -1, -1, 2, 2, m, 5 and 3, 11, 6. They are collinear. Then we have to find the value of m. So for the points to be collinear, the ratio of the difference in their coordinates must be equal. That is x2 minus x1 by x3 minus x2 equals y2 minus y1 by y3 minus y2 equals z2 minus z1 by z3 minus z2. Here these are, this is x1 y1 z1, and this is x2 y2 z2, and this is x3 y3 z3, right? So put the values in this equation and we will get 2 minus 1 upon 3 minus 2 equals m plus 1 upon 11 minus m equals 5 minus 2 upon 6 minus 5. So first solve this one. So solving this, we will get m plus 1 upon 11 minus m equals, this will be 3 upon 1, right? So what we get? We get m plus 1 equals 33, cross multiply, right? 33 minus 3m, and simplifying this will इधर लेकर आएंगे तो कितना आएगा? 4m equals 33 minus 1 which will be 32. इसको इधर लेके जाएंगे RHS में. So m equals 8, right? M equals 8. You can verify with this by equating this condition. And so option number 3 is the correct answer. Question number 140. We have to find the set of solution of the inequality mod x plus 2 less than equal to 5. So simplifying this, x plus 2, once x plus 2 is less than equal to 5, from here we will get x less than equal to 3, right? And another will be minus x plus 2 लेस देन इक्वल टू 5, बिकॉज अगर हम मोड हटाते हैं तो एक बार प्लस वाली आती है, एक बार माइनस वाली आती है. सो इट विल गिव एक्स प्लस 2. अगर मेरे को माइनस का साइन रिमूव करना है, इधर लेकर आना है, तो इनइक्वालिटी चेंज हो जाती है ग्रेटर देन इक्वल टू 5. हाउ दिस इनइक्वालिटी चेंज? अगर मैं देखो -1 इज लेस देन 5, लेस देन इक्वल टू 5. अगर मैं इधर माइनस को हटा के इधर लेके आऊँगी तो 5 -5 आएगा. तो 1 इज़ ग्रेटर देन इक्वल टू 5. इसलिए हमेशा जब भी हम माइनस साइन को इनइक्वालिटी के केस में अगर ट्रांसफ़र करते हैं तो हमेशा ये जो साइन है ये अपोजिट हो जाता है,
ठीक है, चेंज हो जाता है, ग्रेटर देन वाला लेस देन में चेंज हो जाएगा, लेस देन वाला ग्रेटर देन में चेंज हो जाएगा, राइट। सो ये इसको सॉल्व करेंगे तो कितना आ जाएगा, x ग्रेटर देन इक्वल टू -7, राइट। सो सॉल्यूशन सेट हमारा क्या आया, x लेस देन इक्वल टू 3 and x greater than equal to -7. So our solution set is -7 to -7 comma 3 closed bracket. ठीक है, the interval -7 comma 3. So option number 3 is the correct answer. Question number 140. We have to find the value of this. So अगर मैं ध्यान से देखूँ, 9 की पावर 1/3 इंटू 9 की पावर 1/9 इंटू 9 की पावर 1/27 इन्फिनिटी तक जा रही है ये ऐसे। अगर मैं देखूँ 9 ये क्या है, बेस सेम है और मल्टीप्लिकेशन में है तो पावर क्या हो जाती है, ऐड हो जाती है। तो 1/3 प्लस 1/9 प्लस 1/27 it goes till infinity. And if I look carefully, this is my infinite GP, right? And we have the sum of infinite GP which is equal to a upon 1 minus r whenever r is less than 1. And here r अगर मैं देखूँ कितना है, 1/3, right? So इसमें इसको अप्लाई कर दो and we will get 9 की पावर सम ऑफ जी भी लगाया 1/3 विच इज a अपॉन जस्ट 1/3 अपॉन 1 माइनस 1/r, राइट। सो व्हाट इट विल गिव, अगर मैं इसको 1 माइनस 1/r को सॉल्व करूँगी तो कितना आएगा, 2/3 आ जाएगा, ये मेरी 2/3 टर्म आ जाएगी। तो 9 की पावर 1/3 अपॉन 2/3, डिनोमिनेटर से डिनोमिनेटर कैंसिल हो जाएगा, 9 की पावर 1/2 and 9 की पावर 1/2 is 3, right? 9 की पावर 1/2 is 3, that is square root of 9. Answer option number 3 will be the correct answer.